Hello guys, this is Gurjap and today we are continuing our chapter of straight lines, and in this video our first topic is general equation of line. Now we all know a general equation of line of first order is written as ax plus by plus c is equal to 0, where a, b, c are constant, but a and b cannot be equal to 0 at the same time. मतलब a 0 होगा तो b 0 नहीं हो सकता, similarly b 0 होगा तो a 0 नहीं हो सकता. Now this is the basic equation of basic form of general equation of line. Now let's discuss a few different forms of general equation of line. Now the first form is slope intercept form. General equation of line is written as ax plus by plus c is equal to 0. We can also write it as by is equal to minus ax minus c. Now dividing every term by b, we get y is equal to minus a x upon b minus c upon b, which is of the form y is equal to mx plus c, where m is equal to minus a upon b, that is slope of the line, and c is equal to minus c upon b, which is y-intercept. So we have a slope, we have an intercept. This is the form of general equation line in slope intercept. Okay, next is intercept form. The general equation of line can also be written as ax plus by is equal to minus c, or x upon minus c upon a plus y upon minus c upon b is equal to 1. Now comparing it with the intercept form, that is x upon a plus y upon b is equal to 1, we get a is equal to minus c upon a and b is equal to minus c upon b. Now this a gives us x-intercept and this gives us y-intercept. So this is intercept form, this is slope intercept form. Next form is normal form. Now we know the general equation of line is ax plus by plus c, and normal form of this equation is cos x cos omega plus y sin omega is equal to p. This is the normal form of this equation. But how do we get here from here? What we do, say this is equation 1. We'll take square of a plus square of b and then we'll take its under the root. Okay? हमने a square लिया, b square लिया, उसका square root. Now what we'll do is we divide every quantity of this equation 1 by this factor. So we get a x upon under the root a square plus b square plus b upon under the root a square plus b square y equal to minus c upon under the root a square plus b square. c को वहाँ लगे minus c, divide किया minus c upon under the root a square plus b square. Now this quantity will give us the value of cos omega, this quantity will give us the value of sin omega, and this quantity will give us the value of p. Now this is the method of acquiring the normal form of any general form of equation of line. Let's take an example to further understand it. Now for example, say we have this equation under 3x plus y is equal to 8. Here a is equal to under the root 3, b is equal to 1 and c is equal to 8. ये आ गई हमारे पास abc की वैल्यू. Now हमें इस इक्वेशन को लेके आना है नॉर्मल फॉर्म में. फर्स्ट स्टेप, स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर ऑफ b उसका स्क्वायर रूट. तो वी गेट अंडर रूट 3 स्क्वायर plus 1 square is equal to 3 plus 1 which is equal to under the root 4 which is equal to 2. ये आ गई हमारे पास क्वांटिटी अंडर द रूट a square plus b square की वैल्यू. नाउ विल डिवाइड एवरी टर्म ऑफ दिस इक्वेशन विद 2. वी गेट अंडर रूट 3 अपॉन 2 x plus 1 upon 2 y is equal to 8 upon 2 which is equal to 4. Comparing it with the normal form क्या थे हमारे पास, x cos omega plus y sin ओमेगा इज इक्वल टू टी. तो हमें इसको क्या कहाँ लेके जाना पड़ेगा, कॉस की और साइन की फॉर्म में. ना कॉस थीटा की वैल्यू अंडर रूट 3 अपॉन 2 कब आती है, 30 डिग्री पे. सो वी गेट कॉस 30 डिग्री एक्स प्लस वाई अब साइन की वैल्यू 1 अपॉन 2 कब आती है, साइन 30 डिग्री पे. सो साइन 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 4. कंपेयरिंग दीज टू वी गेट ओमेगा की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, ओमेगा is equal to 30 degree and p is equal to 4. So this is how you get normal form of any general equation of line.
Now let's solve some example on different forms of general equation of line. First one is we have to reduce these two equation in slope intercept form. So let's take the first equation. We have x plus 7y is equal to 0. तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए हमें क्या फॉर्म चाहिए होती है? वी नीड y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये वाली फॉर्म. सो हमारे पास c क्या है यहाँ पे? 0. सो विल राइट 7y इज इक्वल टू माइनस एक्स और y इज इक्वल टू माइनस 1/7 x प्लस 0. तो यहाँ से कंपेयर करा के हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई? स्लोप इज इक्वल टू माइनस 1/7 and c, that is y intercept, is equal to 0. Hence the solution. Now second equation is 6x plus 3y minus 5 is equal to 0. इसको भी हमने इस फॉर्म में लेके आना है. So what we'll do is we take 3y is equal to minus 6x plus 5. पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया. So next is y is equal to minus 6/3x plus 5/3 और y is equal to minus 2x plus 5/3. Comparing it with slope intercept form, we get m is equal to minus 2 and c is equal to 5/3. So in this case, we have slope is equal to minus 2 and y intercept is equal to 5/3, and hence the solution. Now in this example, we have to reduce this equation in intercept form. Intercept form क्या होती है? x upon a plus y upon b is equal to 1, where a is equal to minus c upon a and b is equal to minus c upon b. ओके हमें इस फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है. हमारे पास a क्या है यहाँ पे 3, b है हमारे पास 2 और c है -12. सो व्हाट विल डू इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 और 3x अपॉन 12 प्लस 2y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1. डिवाइडिंग एवरी टर्म बाय 12. नेक्स्ट स्टेप वी गेट x अपॉन 4 and y upon 6 is equal to 1. So comparing it with intercept form, we get a is equal to 4, b is equal to 6. This is x intercept and this is y intercept, and hence the solution. Now in this example, we have to reduce these two equations in normal form. So normal form के लिए first equation we have x minus under root 3y plus 8 is equal to 0 और x minus under root 3y is equal to minus 8. ओके अब यहाँ पे ए बी सी क्या है हमारे पास? दिस इज ए क्या हुआ यहाँ पे 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स. दिस इज बी दैट इज अंडर रूट 3 एंड दिस इज सी. तो सी की वैल्यू हमारे पास -8, बी की वैल्यू है हमारे पास माइनस अंडर रूट 3. हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू. तो ए हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 3 विच इज इक्वल अंडर रूट 4 विच इज इक्वल टू 2. ये आ गया हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है नॉर्मल फॉर्म के लिए? हर एक टर्म को हम क्या करेंगे? इस टर्म से, इस क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे. सो वी गेट एक्स अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 वाई इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 2 4 ज़ा 8. So we get x upon 2 minus under 3 upon 2y is equal to minus 4. Now comparing it with normal form जो कि है x cos omega plus y sin omega is equal to p. तो उससे पहले हमें यहाँ पे क्या चाहिए? sin और cos. अब cos की कौन सी वैल्यू 1/2 की इक्वल होती है? 120 डिग्रीज पे. So we get cos 120 डिग्री इंटू एक्स प्लस वाई की भी 120 डिग्री पे वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2. सो वी गेट माइनस वाई साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू -4. सो कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशन वी गेट ओमेगा is equal to 120 degree and p is equal to 4, and hence the result. Now the next equation is y minus 2 is equal to 0. यहाँ पे x की क्वांटिटी नहीं है, so we can write 0 into x plus y minus 2 is equal to 0 और 0 into x plus y is equal to 2. a हमारे पास 0, b हमारे पास 1, c हमारे पास 2. नेक्स्ट स्टेप नॉर्मल फॉर्म के लिए we find under the root a square प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए है 0, बी हमारे पास 1 दैट इज अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1. ओके डिवाइडिंग एवरी टर्म बाय 1. फिर से वही आ गया हमारे पास 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2. ये आ गया हमारे पास एवरी टर्म को इससे डिवाइड करने के बाद. ओके कोई फर्क नहीं पड़ा. अब
x के साथ क्या होता है cos ओमेगा, जनरल फॉर्म नॉर्मल फॉर्म क्या होती है cos ओमेगा इंटू एक्स प्लस वाई इंटू साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी की फॉर्म में। कूल। अब cos ओमेगा यहाँ पे जीरो कब आएगा, ओमेगा की कौन सी वैल्यू पे, यहाँ पे जीरो आना चाहिए। cos की वैल्यू जीरो कब होती है 90 डिग्रीज पे। सेकेंड यहाँ पे वन, साइन की किस वैल्यू पे, यहाँ पे वन आएगा। नाउ साइन की वैल्यू अगर 90 डिग्री, ओमेगा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। सो इन दिस केस वी गेट x इंटू कॉस 90 डिग्रीज प्लस y इंटू साइन 90 degrees is equal to 2. Comparing these two equations, we get omega is equal to 90 degree and p is equal to 2. And p is equal to 2, and hence the result. Now the next topic is distance between a point and a line and distance between two parallel lines. First one is distance between a point and a line. Say we have a line ax plus by plus c and point p with the coordinates x1 and y1. So the distance between this point and this line, say d, is given as d is equal to mod of a into x1 plus b into y1 plus c upon under the root a square plus b square. This is the formula to find distance between a point and a line. Second is we have to find the distance between two parallel lines. So what we do, say these are two parallel lines. So we know that we have to find d. Firstly, we know if we have two parallel lines, so the slopes are equal. Say slope of first line y is equal to mx plus c. First line is of the form y is equal to mx plus c in slope intercept form. Second, y is equal to mx plus c2, c1 and c2. So distance between these two lines will be equal to c1 minus c2 mod अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस m स्क्वायर। इन दोनों की स्लोप क्या है इक्वल, दो पैरेलल लाइंस की स्लोप क्या होती है इक्वल, बट दिस इज इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इन सिंपल फॉर्म। से वी हैव टू लाइंस a x प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड लाइन इज a x प्लस by plus c2 is equal to 0. So distance between these two lines will be equal to, ये फॉर्मूला भी चलता है but we need to simplify it to in the form of general equation of line. So we'll write d is equal to mod of c1 minus c2 upon under the root a square plus b square. Now we know the formula to find distance between a point and a line and distance between two parallel lines. Let's look at some examples. Now the first example is we have to find the distance between the point minus 1 1 and the line 12 into x plus 6 plus 5 into y minus 2. Okay, तो हमें क्या निकालना है डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है d इज इक्वल टू मॉड ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c मॉड अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास पहले इसको सॉल्व करते हैं। वी गेट 12x plus 12 into 6 plus is equal to 5y minus 10. So we get 12x plus 72 is equal to 5y minus 10 implies 12x minus 5y plus 72 plus 10 is equal to 0 implies 12x minus 5y plus 82 is equal to 0. ये आ गया हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हमें क्या निकालना है a b c x1 एंड y1। तो हमारे पास इस केस में a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 82 एंड x1 y1 इज इक्वल टू पॉइंट क्या दिया हमारे पास -1 एंड 1। Now using all these values in this formula we get d is equal to a that is 12 into x1 क्या हमारे पास -1 plus b -5 into y1 that is 1 plus c that is 82 mod divided by under the root a square plus b square, which gives us d is equal to -12 -5 plus 82 divided by
under the root 144 plus 25, which is equal to 82 minus 5 minus 12 gives us 65 mod divided by under the root 169. अब 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13, so we get mod of 65 divided by 13, which is the distance between this point and this line. Now in the next example we have to find the distance between two parallel lines. ये हमें दो parallel lines दे रखी है, we have to find the distance between them. तो firstly distance between two parallel lines is given by d is equal to mod of c1 minus c2 divided by under the root a square plus b square. हमें क्या निकालना है, a b, c1 c2 चाहिए हमारे पास, तो a और b हमारे पास क्या है 15 and 8. a is equal to 15, b is equal to 8, c1 हमारे पास minus 34 and c2 है हमारे पास 31. ओके, चार क्वांटिटीज हैं, पुट देम इन दिस फॉर्मूला, वी गेट d is equal to mod of minus 34 that is c1 minus c2 that is 31 divided by under the root 15 square plus 8 square, which gives us minus 34 minus 31 gives us minus 65 mod divided by under the root 15 square is 225 plus 8 square is 64. So we get mod of 65 gives us 65 divided by 225 plus 64 gives us 289 under the root. Now 17 square is equal to 289, so we get 65 upon 17, which is the distance between these two parallel lines. Now in this example we have to find the equation of line which is perpendicular to this line having x intercept is equal to 3. अगर इस लाइन की हमने इक्वेशन निकालनी है जो परपेंडिकुलर इस लाइन है, तो हमें क्या निकालना है बेटे, सबसे पहले स्लोप, बिकॉज वी नो इफ वी हैव टू लाइन्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उन दोनों के स्लोप्स से m1 प्लस m2 शुड बी इक्वल टू -1. इसकी इक्वल आती है, अगर हमारे पास एक की स्लोप आ गई, हमारे पास दूसरे की स्लोप आ जाएगी, हमारे पास x इंटरसेप्ट पहले से दे रखा है, वी कैन फाइंड इट्स इक्वेशन. सबसे पहले इसकी स्लोप निकालते हैं, वी गेट -7y इज इक्वल टू -5 प्लस x और y इज इक्वल टू -x अपॉन 7 प्लस 5 अपॉन 7. ओके, तो इसको हमने लिखा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये जो क्वांटिटी होती है ये किसकी इक्वल होती है, स्लोप ऑफ द लाइन के इक्वल. सो वी गेट m इज इक्वल टू -1 अपॉन 7. ये आ गई स्लोप ऑफ दिस लाइन. कुल से सपोज जो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप है m2 के इक्वल. सो वी नो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. m1 हमारे पास -1 अपॉन 7 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. माइनस माइनस कैंसल, m की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे 7. कुल ये आ गया हमारे पास स्लोप ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. उसका इंटरसेप्ट भी हमारे पास है x इंटरसेप्ट. वी नो y इज इक्वल टू m x माइनस d. दिस इज x इंटरसेप्ट, तो इसमें हम m और x इंटरसेप्ट की वैल्यू पुट कर देते हैं. वी गेट y इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 7 x इंटू d की वैल्यू हमारे पास 3. सो इक्वेशन ऑफ लाइन for this case becomes y is equal to 7x minus 21 and hence the result. Now the next example is we have to find the angle between these two lines. Okay, firstly इसको solve करते हैं, दोनों को solve करेंगे हम slope intercept form में. We get for this equation y is equal to 1 minus under 3x और y is equal to minus under 3x plus 1. तो यहाँ पे ये क्या आ गया हमारे पास, इस लाइन की slope m1 is equal to under the root 3. For the second equation, we have x plus under root 3y is equal to 1 or y is equal to minus x upon under the root 3 plus 1 upon under the root 3. तो इस केस में slope of this line is m2 is equal to -1 upon under the root 3. We know slope of line m is equal to tangent theta. So here tangent theta 1 is equal to m1 and tangent theta 2 is equal to m2. We also know that angle between two slopes is written as tangent alpha is equal to m1 minus m2 over 1 plus m1 m2 whole mod. ये आ गया इसका फॉर्मूला. Using m1 and m2 in this formula we get tangent alpha is equal to m1 हमारे पास अंडर द रूट 3
minus 1 upon under the root 3 divided by 1 plus under root 3 into 1 upon under the root 3 mod, which gives us under root 3 into under root 3 minus 1 upon under root 3 upon under root 3 under root 3 cancel, we get 1 plus 1 2 mod, which is equal to under root 3 into under root 3 gives us 3 minus 1 upon under the root 3 divided by 2 mod, which gives us 2 upon under the root 3 upon 2 2 से 2 cancel, so final result we get tangent alpha is equal to 1 upon under the root 3. ये आ गया हमारे पास टेंजेंट अल्फा की वैल्यू. अब टेंजेंट की वैल्यू किस डिग्री पे 1 अपॉन अंडर रूट 3 होती है, वी नो दैट इज 30 डिग्री पे. सो वी गेट अल्फा इज इक्वल टू 30 degrees, which is the angle between these two lines. Now in this example we have to find coordinates of the foot of perpendicular from this point to the line 3x minus 4y is equal to 16. तो we have a point and a line. ये पॉइंट इस लाइन पे क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है. हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं. से कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट आर ए बी. लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. सबसे पहले ये दोनों पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, ए बी एंड माइनस 1 3. सो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज गिवन एज बी से m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. सो b माइनस 3 अपॉन a माइनस ऑफ माइनस 1 विच इज इक्वल टू b माइनस 3 अपॉन a प्लस 1. ये आ गई स्लोप बिटवीन दिस टू पॉइंट. सेकेंड स्लोप दैट इज m2 विल बी ऑफ दिस लाइन. तो m2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, से पहले इस लाइन को सॉल्व करते हैं. वी गेट माइनस 4y इज इक्वल टू 16 माइनस 3x और y इज इक्वल टू 3 अपॉन 4x माइनस 16 अपॉन 4. 4 4 16. सो y इज इक्वल टू 3 अपॉन 4x माइनस 4. ये किस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में. तो स्लोप क्या गया हमारे पास 3 अपॉन 4. तो सेकेंड स्लोप है हमारे पास इस लाइन की 3 अपॉन 4. नाउ वी नो अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों की स्लोप्स का मल्टीपल m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1 इसके इक्वल होता है. सो यूजिंग दिस वी गेट m1 दैट इज b माइनस 3 अपॉन a प्लस 1 इंटू m2 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 1. ओके, सो 4 इनको मल्टीप्लाई कर दो, वी गेट 3 इंटू बी माइनस 3 अपॉन 4 इंटू ए प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1. और दिस इम्प्लाइज 3 इंटू बी माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू ए प्लस 1. 3b माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 4a माइनस 4 और 3b minus 4a plus 4a is equal to minus 4 plus 9 implies 3b plus 4a is equal to 5. ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन ए और बी की फॉर्म में. से दिस इज इक्वेशन 1. आल्सो दिस पॉइंट वाज लाइंग, ये था हमारे पास कोई परपेंडिकुलर और ये पॉइंट ए बी लाई कर रहा था इस लाइन पे. ओके, सिंस दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन दिस लाइन वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 3a minus 4b is equal to 16. Say this is equation 2. Now we have these two equations in the form of a and b. Let's solve them. तो सबसे पहले क्या करेंगे, multiplying this equation by 4 and this equation by 3. We get 4 3 12a plus 9b is equal to 15 and this equation becomes 12a minus 16b is equal to 16 into 4 that is 64. ये आ गया हमारे पास दो इक्वेशन. तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड नेगेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव. 12 से 12a कैंसल. 9 प्लस 16 gives us 25. b is equal to 15 minus 64 will give us 49. So b की वैल्यू क्या जाएगी, b is equal to this minus 49 sorry. So b is equal to minus 49 upon 25. ये आ गई हमारे पास b की वैल्यू. यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1. ओके, जिसमें 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, सिर्फ इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करना है. इस इक्वेशन में हमने b की वैल्यू ये वाली पुट करनी है. सो वी गेट 4a प्लस 3 इंटू बी की वैल्यू हमारे पास माइनस 49 अपॉन 25 माइनस 49 अपॉन 25 इज इक्वल टू 5.
So we get 4a plus 49 into 3 upon 25 is equal to 5, or 4a is equal to 5 minus of 49 into 3 upon 25, minus plus, we get 5 plus 49 into 3 upon 25. अब LCM लेंगे, so implies 125 plus 49 into 3 gives us 147 divided by 25, which is equal to 147 plus 125 is equal to 272 divided by 25. So 4a is equal to 272 divided by 25 implies, this implies a is equal to 272 upon 4 into 25. 4 6 is 24, 3 carry 32, 4 8 is 32. So a is equal to 68 upon 25. We got value of a and value of b. So we had to find the coordinates of the foot of the perpendicular from this point to this line. वो coordinates हमारे पास a, b, जिसकी value हमारे पास है a is equal to 68 upon 25 and b is equal to minus 49 upon 25, and hence the result. So guys, this was it for today. If you have any doubts regarding the chapter of straight lines, you can leave them down in the comment section. Next time we'll begin with a new topic. Till then, keep practicing.